I mean, except studies and chapter, nothing you are talking. And I will not encourage anybody. I said anybody. So what was the last topic that I completed? Tell me. Just started. Did I explain all three types of rocks? Did we do some characteristics and features? Sediment will be. ये ऑप्शन क्या है? इधर एक काम करो. Whoever is two, separate one. And you come forward. You go behind. Let the girl go that side. You go behind. सबको बात नहीं करेंगे. वो मैं देखता हूँ. बात नहीं करते. ये बोलता है ना वो चेरी मेरी फालतू का. You don't waste the time. जल्दी कर. नहीं. One in a bench. On. Even the girls are making. अच्छा आप पीछे चले. पीछे पे. तू उधर ही बैठ. Now be very sure, except studies, you are talking anything, I will see you outside the class. And don't give me. Hey, हाँ कुछ नहीं होना. लड़की नहीं है, गिर के तो बचा. So it's very simple. There is one thing called laccoliths and batholiths. They'll ask to distinguish. Before I take you to laccoliths and batholiths, there are two types of rocks for igneous. One is intrusive and another is extrusive. मैं बता रहा हूँ. And you write the definition now. How the children write? Rocks which are formed above the surface of the earth. It is not above, on the surface of the earth. Rocks which are formed inside the surface of the earth. If you remember, I showed whenever these shoots are coming straight out, molten magma and lava. Whereas some shoots are going within the earth's surface. And somebody, I don't know, foolishly asking, कितना टाइम पे ठंडा होगा, कब मैं उसको पता कर सकता है, कैसा होगा? Because I know you're all top class, top notch foolish university. How could a person go below 5 kilometers or 9 kilometers check कब? अच्छा अभी आया? अच्छा ठीक है ठंडा होगा. Nothing. But then we need to understand, without these rocks, they are very susceptible to affected by the climatic changes, especially which are extrusive. फिर एक sills and dikes आएगा. Sills are of larger one, dikes are of smaller one. फिर उससे भी छोटा narrow rocks दिखेगा. That is veins. है उधर? Veins है. Sills, dikes. लैकोलिथ इधर है. मुझे मालूम है ना dikes and next. तो आप लोग एक काम करो, types of intrusive rocks डालो. I will only give it. Types of intrusive rocks. Because exam में surely laccolith and batholith आता ही है. Shall I? We are in the chapter called rock. Okay, why can't we add the word S here? Rocks, both type के होते हैं. So we are with the end of June. July is starting next tomorrow. Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow there will be. And From tomorrow there will be 1/7. Today, but normally ये monsoon का देखना पड़ेगा because normally Maharashtra gets maximum of the monsoon in the month of July. This time June has really cleared everything. अभी देखते हैं July what it is going to be. Types of intrusive rocks. इसमें first लैकोलिथ की वॉल्यूम में बैक्टोलिथ है. हाँ पहले वो लिखो बैक्टोलिथ. ये मुझे क्रिश्चियन वर्ड लगता है. Deep seated. It is from the volume only. Volume बाजू में रखा तो सारा मिल जाएगा. Deep seated intrusions
deep-seated intrusion in the dome-shaped structure. Sorry. I hope you understand what is dome-shaped. Yes, sir. Yes, sir. Something like that. ताजमहल का ऊपर था अरे कुछ एग्जाम्पल भी कुछ जानकारी नहीं है। ताजमहल का अगर वो बैथोलिक बन गया तो फिर क्या है? औरंगजेब और क्या वो नीचे जाके लेके आएगा? The next one, continue. Dome-shaped structure with no definite floor, F-L-O-O. Second point, same heading. Sometimes they may be exposed to the Earth's surface, only if कब होगा ये expose होता है? तो लिखना continued erosion occurs. If continued erosion occurs, underline the word continued erosion and look at the board for a minute. You'll understand what this continued erosion is. As you have written, first point, it is dome shape and the surface of the earth is like here. Correct? अभी सोच लो ये इतना feet of soil है. But by the time this dome-shaped batholith is hardened, correct? ये जो region है, erosions happening. So sometimes what will happen? The erosion is in such a way, it has occurred like this, correct? So this part of the dome structures is up. Doesn't matter what I'm saying. क्या हो गया है? You father has called. जैसे इसको छोड़ना है. क्या reason है? What happened? चलो 8 बजे नहीं 8 o'clock ना. हाँ ठीक है. अभी से 5 बजे. हाँ. बस reason क्या है? सब बर्थडे पार्टी किसकी बर्थडे अच्छा छोड़ दो. You go. पता नहीं मुझे So now you understand what is this continued erosion? This was the structure of soil which was earlier, but one side or other side the erosion is taking. So I cannot say the entire batholith will be out. Maybe some part of the batholith is seen above. You go to south side area, ऐसा rocks बहुत दिखेगा. In fact, just next to my house in hometown where I am, we have a big Ganesh temple. And वो Ganesh temple भी कैसा बना? बहुत बड़ा rock है वो. You have to climb around 11 to 15 steps तब जाके. And वो rock कब आया? My grandpa might be knowing. I do not know. But that entire city or that particular town is full of this granite rocks only. फिर एक लिया होगी So where is your hometown? So where it is earlier on. So we always believe where we believe this rock structure is exposed when what type of erosion is happening? Continuous erosion. Okay, chalo, one more sentence फिर laccoliths में जाएंगे. Second point. हाँ. These are the prime sources of. तेरा नोटबुक आज चेक करने वाला हूँ and तुझे वॉशिंग मशीन में तेरा स्टेप का ऑर्डर बोला है. क्या? इस साल नहीं. नहीं. These are the main source of hard granitic rocks. Hard granitic rocks as found in granite, TIC was found in Ranchi. Granite rock. Granitic rocks. Found in Ranchi. Ranchi, MS. Now you go to laccoliths. तो एग्जाम में लिखना है हाँ नहीं है और शॉर्ट देता था पर laccoliths लिखा हाँ सर under this yes sir लिखो magma does not reach to the crust of the earth. Magma does not reach to the crust of the earth and becomes solid
just below the crust. Underline that word, just below. One more sentence. And the solids and solidified just below the crust of the earth. The same point. No, wait. New point. Laccoliths are the result of different types of intrusions of magma. अलग-अलग type का intrusion. Intrusion of magma forms different shaped features. Forms differently shaped landforms. Underline the word differently shaped. So different types of Landforms. तो ये दोनों अंदर है. कौन थोड़ा हायर लेवल पर है? लैकोलिथ. कौन थोड़ा लोअर लेवल पर है? बैकोलिथ. और बैकोलिथ भी अबव द सरफेस आएगा. कब आएगा? कंटिन्यूस इरोजन ये सरफेस पे होना चाहिए, तब जाके आपको बैथोलिथ दिखेगा. ना बैथोलिथ अंदर ही है. देखो, ग्रेनाइट्स आर दोस रॉक्स व्हिच आर जनरली वेरी कॉस्टली. ये जो ब्लैक कलर का रॉक हम लोग ये रॉक स्ट्रक्चर लेकर आते हैं ना, ये रोड बनाने के लिए, वो भी एक टाइप का ग्रेनाइट ही है. वो तो टार है, टार. दैट इज टार, हिंदी बोल है. So we believe this granite is a rock which is very costly for construction because of its hardness. And granite is a which rock? Igneous or metamorphic rock? Metamorphic rocks. shiny rock. अरे वो अंदर है ना भाई, अभी बाहर तो आया नहीं. तो वो tremendous heat and pressure से बनता है ना. हाँ? Obsidian. वो भी एक टाइप का metamorphic rock है. चलो नेक्स्ट लिखो, सिल्स. एग्जाम में पूरा आता है 4 मार्क का. सिल्स, फिर आएगा डाइक्स. अभी पहला वी आर राइटिंग फॉर सिल्स. व्हाट आर सिल्स करके पूछेंगे. दीज आर रॉक्स formed when the magma flows between the layers of rocks. Put a hyphen, right? Horizontally. Layers of the rocks horizontally. Or horizontally, how do you pronounce? Underline the word between the layers and horizontally. Now go for dikes. D-Y-K-E-S. Dikes. Opposite of sills, when the magma forced upward filling vertical cracks. Upward filling. ये ऐसा horizontal नहीं, ऐसा fill हो. Upward filling horizontal cracks. Opposite of upward filling In horizontal vertical cracks. Sorry. vertical cracks. After few days or months, it hardens to form what? Dikes. The last part is sorry. It is next. ये सबसे minute part. A passage of an extinct volcano. Filled with magma. Passage of a volcanic Extinct volcano filled with magma solidifies
later known as volcanic neck (NECK) or plug, later known as volcanic neck or plug PLEG. अभी देखो ये ऐसा रहेगा, if this is a volcanic mountain, ये उसका vent था, मतलब मैग्मा यहाँ तक आया है, but it has not busted up, इधर ही रह गया, तो ये पूरा solidify होता है. तो do you think volcano future में यहाँ से आ सकता है? नहीं आएगा. It might takes like this, it might take shooter. फिर अगर ज़्यादा अगर उसके पास force है, तो फिर ये एक अलग से crater बन जाएगा. समझ में आ रहा है? So this is what's the internal composition. देखो, however science is developed, till now for earthquake and volcano we don't have anything precaution. पहला स्ट्राइक होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान हमेशा न्यूज़ में बहुत सपने में देखता रहता कि आज मारा कल मारा आज मारा, जिस दिन बेचारे बोलते हैं आज इंडिया नहीं मारेगा, इंडिया उसी दिन ठोकते हैं एंड रात को 3:30-4 बजे. Now, one of the astrologer has released the date by September 2 India might go for Sindoor 2.0. But Pakistan अपना मुंह बंद करके नहीं बैठा है, चालू अल्लाह में चालू उनका. सर बम्बिंग करते अल्लाह अकबर. हम हिंदुस्तान का और एक पार्ट पढ़ेंगे, रुक जा बेटा रुक जा. And India is getting warmed up here. सारा वेपन्स लेके रेडी बैठा है. हो गया, चलो एक दिन तो कोई so we are always forced to say हमारा volcano भी वैसे ही है. So when you are expecting sir next week हो सकता है, ये week हो सकता है, मालूम पड़ा जिस दिन सोचा उसी दिन हो गया. हाँ but earthquake, देखो Japanese people are very much, you know, acquainted with this earthquake. Because they feel that every 3 months there are more than 5 major earthquakes have happened. And Japanese people का जो building हो या घर हो, 90% are earthquake proof. That is why the devastation in Japan is very less. अभी हमारे जैसा पाम बीच एरिया में आ जाओ, 6 महीने के अंदर उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया. यार अभी 6 महीने पहले तो पूरा दान था, छुट्टा ब्राउजर 7.5 करोड़ का फ्लैट है. मतलब अच्छा हमारा कचरा भी उधर ही डाल देते हैं. तो सोचो अगर हल्का सा भी अगर अर्थक्वेक ने झटका भी दिया ना, ये 42 स्टोरी का बिल्डिंग, फिर पता नहीं 7 करोड़ आके 7 पैसे का बिल आएगा. हमारे एरिया में एक वो उस तरफ जो आगे कौन सा स्कूल है, उधर उन लोग ने अर्थक्वेक प्रूफ घर बनाया. मिलेनियम कॉम्प्लेक्स ना, मिलेनियम. पहली बारिश में इतना लीक हुआ मुझे याद है जब मैंने फ्लैट लिया, सब लोग बोला मिलेनियम में नहीं लिया, बोला नहीं, क्योंकि वो पूरा ब्रिक से नहीं बना है, पूरा आरसी से बना है पूरा बिल्डिंग. पानी नहीं रहा, हर जगह लीकेज. अभी जाके देखो मिलेनियम कॉम्प्लेक्स, ऐसा लगता है कि वो गरीब कचरे लोगों का डिब्बा के जैसा वो बिल्डिंग. हाँ, एंड जैसे ही राइनसन पर नाम लेते सर वो बीएमसी स्कूल है सर. सॉरी क्या यार, तुझे क्यों इसको नहीं भेज रहा हूँ, उसका ही है फंक्शन. उसका मम्मी का बाली कॉल आया नहीं क्या है सर, वो साथ देते और भी कुछ काम है जो अलग करने का रहता है. हाँ सर, शादी. हाँ ठीक. उसके बाद सब well trained and well equipped. बहुत अच्छा क्लास, बहुत मजा आया पढ़ के. थैंक यू. चल जा, रुक जाता फिर आधा घंटा. नहीं सर बहुत पढ़ी. जा. हाँ क्यों उधर कुछ कीड़ा कर रहे हैं, बैठो उधर. घुटन तुझे तेरा लेक्चर में आके बैठा रहता है, तेरा भी घुटन. आ जा. Write the next heading, sedimentary rocks. Sedimentary. थोड़ा जल्दी करते हैं, तो ये चैप्टर को जरा समझ करने का बोर्डिंग क्या होता अच्छा है. इसके बाद earthquake and volcano, I just love it. इधर इजी कवर है. तो तुझे देख के भी लग रहा है तू बहुत पढ़ाकू है. आज तो वायर गया है वायरस. चल, rocks formed
with layer by layer deposition, rocks which are formed with layer by layer deposition and with compressional sedimentary and tensional forces. Solidifies forces, solidifies to form यार तू भी लड़कियों को हेल्प कर रहा है गुड पढ़ाई में इतना इम्प्रूव हो गया ना मैं हैप्पी गुड है आज से बहुत चालू हो गई क्या माउथ एग्जाम से एग्जाम चल रहा है ये माउथ तो कौन सा माउथ 1 माउथ 2 या माउथ अच्छा माउथ पहले ही पेपर अच्छा है ठीक है बहुत अच्छा पेपर सर हमें लगा मैं एक स्टोरी सुना सिंपल है मुझे याद रहता था जब आप लोग के जैसे स्टूडेंट रहता था ना एग्जाम का टाइम आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क स्टडीज रात रात भर बैठ के चलाने सर मैं भी सर 12 से 3 घंटा सोने का दिन भर पढ़ने का मेरे से बहुत बाद जन्म हुआ सर आप पूरा पढ़ते थे लैपटॉप लेके बैठते हाँ देख बता दे मैसेज कर दो सुबह से उठ के और जैसे ही लास्ट एग्जाम होगा ना आई विल प्रॉमिस टू माय मदर नेक्स्ट एग्जाम से ना मैं हर रोज पढ़ाई बट नेक्स्ट एग्जाम बोल के जिस दिन आऊंगा ना उस दिन 2 दिन तक तो उठूंगा ही मैं बोला रे चुपचाप रहो एग्जाम में भी खत्म हुआ तो पापा बोले यार तू तो बोला करेंगे ना अभी अगले हफ्ते से करेंगे ये हफ्ता तो इसकी चल रहा है. But one thing I make it sure, if I sit 9 to 12 or 12 to 5 next morning, I will make it a point that I will finish the entire subject. But then I remember during certain, I think it was in my 12th or 11th, I don't know. I used to hear some lot of 3 a.m. some क्या पायल का आवाज ये सब मेरा बिल्डिंग में बहुत लोगों ने बोला. I still remember certain things I have observed and I have seen through my windows also. सिर्फ आवाज ट्रैवल कर रहा है इधर से उधर से इधर बट दिखता कोई नहीं है सर जाएगा मम्मी को उधर क्या सब हो सकता है कि मैंने पायल पहनी हो तू तभी बॉल नहीं होना उसलिए आ गया छुआ क्या इतना बड़ा रहता है पानी सिर्फ क्या नाच मयूरी है क्या पायल तो जाएगा हाफ एन आवर ना व्हाट आई विल डू आई विल शट द बस and I'll try to see कि where I am sleeping or not sleeping. फिर से 4:30 बजे चल उठ फिर से start. तो आप लोग एक काम करो. You have the habit of studying night ना make it very simple. 12 बजे से पहले जो भी आपका डिनर या वो प्रोग्राम करो खत्म करो और 12 से 3 रखो. मेरा तो 12 से पूरा मॉर्निंग 6 o'clock तक रहता था. 7:30 को मेरा पेपर तो आधा घंटा सो जाता. But now the eyes and the headache I am facing ना because of such hard work. Now if I awake अभी भी मैं सोता हूँ 3 बजे सोता हूँ सुबह 6 बजे उठ के मैं चले जाता हूँ लेक्चर्स के लिए बट वो इफेक्ट रहता है बट इसका एडवांटेज क्या है ना दिन में ना मैं एक चैप्टर कम से कम 3 घंटे में करें वही रात में 3 घंटे में पूरा टेक्स्ट बुक लिखूं बिकॉज नोबडी इज डिस्टर्बिंग एंड मोबाइल भी था या लैंडलाइन का सब उठा के साइड में रख देने का क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लोग रात को आंसर रहे सर वो दुनिया में जो 1% लोग जेनेटिक्स होता है कि वो 4 घंटे ये हमारा अब वो देखो वो तो सबको चाहिए मुझे भी चाहिए तुझे सबको चाहिए बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई एम रेडी टू आई स्टिल रिमेंबर माय हां क्लासिकल वही तो खाना खाने में तेरे से तो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ होता है सर 4 बज के रात भर गेम खेलते हैं मेरा फ्रेंड क्या सकता है सर कुछ फर्क नहीं पड़ता तेरा फ्रेंड तू है ना 10th में मिल मुझे कैसा हार्ड वर्किंग है सर मेरे पास तो उनको सर हां वही 10th में मिल बोला सर मेरे तो चलता है सर यूटी टेस्ट में तो 2-3 कॉमन है इससे सर पूरा आंख लाल होता था मेरे को पता है इसके तो समझ में आया लेट अस कम टू सेडिमेंटरी रॉक्स सेकंड पॉइंट mainly sedimentary rocks mainly comprises of various sediments of organic mainly comprises of various sediments of organic
and inorganic material Some areas. and are also referred as and are also known as. तो इतना फास्ट है मैं फुल स्टॉप लगाने से पहले तो आगे चले हाँ materials and are also known as put it into double inverted commas secondary rocks ये क्यों secondary है क्योंकि बाकी उसे शेयर करके बनता ही है as they are formed by solidification of sediments as they are formed by solidification of sediments of primary igneous and metamorphic rocks. उन दोनों से मिलके ये solidification of sediments of primary igneous. समझ रहा है what you are writing? Yes. And metamorphic rocks. Primary. And metamorphic rocks. Primary igneous and अभी characteristics. I'll give the shortest sentence possible. थोड़ा fast जाऊंगा. Okay. Sir, metamorphic primary कौन सी थी secondary है वो भी? देखो क्या पता ओनली इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बना होगा हाँ उसका टूटा हुआ पार्ट इसका सेडिमेंट बन गया मतलब वो primary और secondary दोनों हाँ दोनों है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट नंबर 1 दोनों हैं it contains fossils or it contains fossils हर एक में ये तो कुछ होता है। छोड़ दे he is very expensive it contains fossils ब्रैकेट में लिखो plant and animal remains ओनली इसी रॉक में फॉसिल मिलता है बाकी कोई भी रॉक में नहीं मिलेगा सेकंड during the process of formation that turns turns loose sediments into rocks loose LOOSE don't write loss So LOSE during the process of loose sediments formation loose sediments are changed into rocks is called the lithification एग्जाम पे आएगा what is lithification that changes into rock जब लूज सेडिमेंट रॉक्स के रूप में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन अंडरलाइन दैट वर्ड लिथिफिकेशन नेक्स्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक what short there most widespread rock तो ब्रैकेट के अंदर लिखो 75% most widespread 75% next generally not crystalline crystalline नहीं रहेगा metamorphic rock crystalline होता है next soft and layered structure soft मतलब आप हाथ से उसको तोड़ नहीं सकते वो नहीं है as compared to igneous and metamorphic soft and layered structure next it forms extensive landforms बस अब ये रीड करके देखो I know that you सर guys ये are जो माउंटेन है ये वो इससे बनते हैं सेडिमेंट देखो माउंटेन्स का जो थर्ड एंड फोर्थ लेवल रहता है जो जमीन से जुड़ा रहता है वो सेडिमेंटरी रॉक है जो टॉप लेयर है वो तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जैसा है अभी तो सॉलिड रहेगा ना वो बना तो हिल बन जाएगा तो हिल सेडिमेंट से बनते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन वी कैन नॉट गारंटी एवरीवेयर चलो रीड करो all the points and come back to me you have any query if not in next 2 minutes we'll go ahead
लिक्विफिकेशन का प्रोसेस तो कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस से होता है ना। हाँ वो सेडिमेंट्री रॉक्स। हॉरिजॉन्टल क्या है? कंप्रेशनल ये है, टेंशनल ये है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारा रूम का लगा वो आके कॉलम है जो हॉरिजॉन्टल, और जो टेंशनल फोर्स को पकड़ते हैं वो इधर पिलर नहीं दिख रहा, अभी पिलर कहीं तो है। हाँ वो पिलर, तो ये बिल्डिंग का टेंशनल फोर्स को संभालेगा, वो आके कंप्रेशनल फोर्स को संभालेगा। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी फिर टाइम लगता है। बराबर। जैसा ग्रो हो रहा है थोड़ा ब्रेन से भी ग्रो होके दिखा कभी। हाँ तभी मुझे अच्छा लगेगा। वेल मैच्योर्ड चलो। ओ माय डियर, रीड करो। वाइड स्प्रेड को वाइड एग्जांपल दे। हाँ तो वैसे ही कर दिमाग से। वाइड स्प्रेड नहीं है, वाइड स्प्रेड होगा। सर ये सेडिमेंट्री का एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट लिखो लिखो। अच्छा एग्जांपल लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। सर फॉर्मूला लिखा तो क्या है? बट एग्जाम में नहीं लिखो। सर आज के बता। आज ही आ रहा है फॉर्मूला। सर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल मतलब शेल भी लिख सकते। जो पोरस है और जो होल्स है वो पूरा सैंडस्टोन। पोरस अरे रॉक थोड़ी है। तेरे सर में ना रॉक है। हम लोग बोलते सर में मिट्टी है, तेरे सर में मिट्टी के भी आगे है। भगवान जब ब्रेन बांटता था ये भाई साहब चलो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे मजेदार एंड माय फेवरेट टू। तो डायमंड है ना स्पेस के लिए। नॉट नेसेसरी, हर टाइम डायमंड में घुस जाओ। सर इसको डायमंड बोलते क्या ऐसा बोल रहे जैसे कि भाई साहब ने स्लाइड में छोटा सा प्रैक्टिकल से बताया। डायमंड हो भी सकते हैं है सर। Rocks when exposed to सर आप किसी पलाश बोलसाल कर बोला वैसे मैं स्टूडेंट ड्यूरिंग द लेक्चर्स लास्ट ईयर तो उससे मुझे तो नाम याद नहीं क्या हुआ सर वो यूटी छोड़ दिया बट आपका नाम बदल बोल रहा है 9th अच्छा हाँ पलाश हाँ वही पलाश तो अभी है किधर सुपड़ा सा गोरा और चश्मिश सर बहुत सर मस्ती पर करता है। हाँ बहुत लास्ट ईयर उसके साथ एक जाड़ा बंदा भी था मुझे बहुत जाड़ा हाँ वो राज आता भी है, है। वो टेस्ट सीरीज के लिए आता है। इसीलिए राज भी तो अरे बट वो सब आपके स्कूल के हैं हाँ सर तो ये जूनियर क्लास नहीं सर क्लास नहीं सर। सीनियर है तो ये रिमाइंड्स मी सर मतलब हम लोग वॉल्यूम नहीं लिखे थे एक बार स्कूल में तो वो समझाते करके क्या सर यूटी के बारे में अच्छा वॉलीबॉल ग्राउंड में यूटी के बारे में बात करते हैं। यूटी के अंदर सर आकर वॉलीबॉल ग्राउंड and give my regards to him. I don't remember. Give my regards. ठीक है? मेरा बच्चा अगर मुझे याद करे तो is my respect, है ना? तो से सर भी तुझे बहुत याद किया, but सर थोड़ा सा भूल गए। कभी अच्छे तो उधर सेंट्रल ब्रांच में आए। मेरे सैटरडे को लेक्चर्स रहता है, आपके लिए तक ही ऐसे मुझे पहले एक दो बैच के लोग मुझे मिलने आते थे जो 9th में थे या 10th में। आदिवासी के लोग बता अरे सर कोई भी अबे ये शायद तो बड़ा भाई भी था। मेरा साधुवानी से क्या समझ सर स्कूल में रहे अच्छा ये वेट वेट यार एक सक्षम करके लड़का कॉमन सक्षम गुप्ता चलाया था फंक्शन कैसा चल रहा है इसको 92 किधर है 99.4 हां समथिंग आपका भी स्टैंड है मुझे नहीं जानता है वन ऑफ माय फ्रेंड इज एजुकेशनल वो अवार्ड तो आई वाज आल्सो वन ऑफ द केस मैं बट मेरा नंबर पर दोस्त है, मैं तो साइंस के लिए आता है। उसका बड़ा भाई भी था यहाँ पे। सक्षम को मैंने कल उतर देखा, मैंने कभी मिला नहीं, अच्छा ही था। उसके मम्मी और पापा आए थे। सर मस्ती इतना करता था सर हमें नहीं लगा ये लाएगा सर और 99 ये अपने जगह पे रहे, उसने लाया ना बस बहुत जल रहा है नेक्स्ट ईयर ये भी लाया है ना इसमें। अबे ईशान 99.9%। देखो देखो मस्ती is on one side. If you are putting your head down and studying at the time, na definitely you will score. And ICSE is really scoring only as compared to CBSE. ICSE मार्क्स मारते हैं। 10th. When you study geography in 10th, I was just having my lectures. History का पता नहीं मुझे,
10th you have lot of options out of 8. सेम पर ये स्टैंडर्ड हाँ ऐसा है? 10th में हाँ हाँ 10th का पेपर लिखा था एज अ राइटर तो पूरा पेपर आया था अच्छा है ना बच्चा, फिर आप तो अभी 10th में मेरे पास तो 80 Superstar भी है। पड़ी है मेरा तो बुक्स भी मिल जाएगी मुझे 80 पढ़ने के लिए when you were in 8th you are writing for the 10th standard student. चलो लिखो लिखो, मैंने क्या बोला? Exposed to tremendous heat and pressure. सर हीट से कैसे सर Temperature लिख दे भाई। वैसे नहीं सर हीट से कैसे तो लिख, तो बीच में डालूंगा तो बन जाएगा। और both सर एंड लिखा है तो दोनों ऐसे tremendous heat or pressure or both. और ट्रेमेंडस हीट और प्रेशर और Sudden change and a shiny hard rock. Sudden changes occur and a hard shiny rock. Put a dash, metamorphic. MR डाल दो। Main features. Point number 1. अरे इतना ही इसके बारे में हाँ, वही features. Point number 1. Much harder and compact or compact and compact ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉच है ना सर ये than their original form. Than, not than. Much harder and more compact than their original form. Next. सर डाउट So जब लिखा बहुत अच्छा है impermeable in nature. This is the word. Careful with the spelling. Impermeable in nature. Bracket में लिखो do not allow the water to pass. ऐसा पाएगा ये पढ़ा था सर उस समय पर ये हुआ होता है अरे ये impermeable बच्चा गलती से पढ़ रहा है। पढ़ाया था उसे ये सर वो बराबर बोल रहा है हाँ पढ़ाया था सर impermeable लिखा do not allow the water बस। Next. permeable in nature Texture and composition. Texture and composition is totally new. Okay. ये वेस्टर्न है, ये वेस्ट है, नेहरू वेस्ट है ना, ये ईस्ट जाने का गाड़ी लेके यहाँ से जाता हूँ ना, ये अच्छा यहाँ से जाते आपको हुए गाड़ी लाए सर इंदिरा गांधी ब्रिज पकड़ेगा, फिर मुझे आना है नेहरू स्टेशन के उस तरफ। अरे मैं सोच रहा हूँ गाड़ी इधर छोड़ो, उधर जाके कुछ और केरला स्टोर से कुछ सामान लेने का, फिर आ जाओ और लेके जाओ। क्या गाड़ी में सर वो तीसरा पॉइंट हाँ तो वो तो फिर इंदिरा गांधी पकड़ेगा, फिर घूमेगा, फिर आएगा, फिर मुझे आपको और वापस घूमना पड़ेगा उससे अच्छा यहाँ से जाएगा तो वो यहाँ से और दूर पड़ेगा। आपको एलपी मिलेगा फिर आप पकड़ के नहीं, I need to go to a Kerala store that side, buy some commodities. सर तो फिर बिना गाड़ी के जाओ स्टेशन चढ़ के हाँ वही बेस्ट फिर है। वापस आएगा स्टेशन के बाजू में ही है हाँ ऑपोजिट ही है। सर तीसरा पॉइंट क्या था सर पहले यूटी उधर होता था ना हाँ that was very विद्यानगर के very ऊपर good। हाँ क्योंकि उधर तो कीड़े हैं। जाएगा हाथी भी है सर नहीं हाथी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कीड़े के लिए चेंज करना पड़ता है। टेक्सटाइल कंपनी अरे the owner was not giving the third property point to sir sir, and sir wanted to purchase that entire and वो कुछ Entire building? हाँ और नहीं वो पूरा फ्लोर एंड ऊपर से रूम काफी सालों से है, मैं जब से आया हूँ वही वहाँ से नहीं मिलेगा ना सर doesn't want to leave that, कुछ लीगल इश्यूज में है दो भाई लोग। अरे चीजें नहीं समझ मतलब वापस से वहां पे जा सकते तो सर ने बोला या तुम बेच दो या तो फिर ये करो, तो उन दोनों भाइयों का ऐसे ही सर ने बोला हमको, तो बाय फोर्स ही हैज टू कम हियर। ये तो पूरा तो ऐसा कचरे दे रखता है एंड वो काफी अच्छा है इसे और बहुत अच्छा सर वो क्या कर रहा है इधर ही है हाँ वो तो ऊपर है, एरिया बहुत अच्छा है, ऐसे डिसेंट भी है, आना जाना भी है, ऐसा लगता है कि वो मचौर के बीच में हम लोग सर वो तीसरा टेक्सचर एंड पॉइंट कंपोजिशन स्टडी Texture and compositions are totally different and new.
texture and composition are totally different and new from the pre-existing rocks. From the pre-existing rocks. Next, pre-existing rocks. Sir, NRL26. देखो अभी igneous आके हार्ड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है, सेडिमेंट्री हार्ड नहीं है बट कॉम्पैक्ट है, समझा? तो दोनों का कैरेक्टर इसमें रहता है। बेस्ट हाँ, आई कैन, अच्छा ठीक है, मतलब igneous एंड सेडिमेंट्री से तो मेटामॉर्फिक बेटर है। अभी यू आर यूजिंग ग्रेनाइट, you are using marble. No igneous or no sedimentary rock is equal to granite and marble. वो तो आपको भी मालूम है, किचन प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट ही है। Although it is very thin, look at the strength of the granite platform. हाँ, कडप्पा भी है, but कडप्पा is not a this rock. You can break it with your one shot of your hand or leg. कडप्पा टूट जाएगा, but granite is impossible. फिर लड़के ने बोला नहीं सर मैं तोड़ सकता हूँ, कैसे हैमर से? हाँ, घर पे जाके तोड़ दे प्लेटफॉर्म। मार्बल है ना, जितना पॉलिश करेगा ना, the quality and its क्या बोलते हैं, richness improves. Next time you visit this Shirdi Sai Baba, the statue is made up of that marble only. It's exact lifelike statue. Then you visit even Taj, the original Taj. I haven't visited Delhi up till yet. They say it is also pure milky white. And वो एक special type of marble है जिसका नाम मकराना marble है, और वो राजस्थान में ही मिलता है, और इंडिया का सबसे महंगा मार्बल में गिना जाता है। अगर मैं बोलूं इसका ओरिजिनल फॉर्म को बेचो, nobody will buy. पॉलिश वाले अंडरस्टूड। सो सेडिमेंट्री का और igneous का पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। It's like you after your 10th standard joining an NDA academy. एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अभी मैं उनके साथ 10th को ही बोल रहा था। NDA का डिसिप्लिन you should not experience, you should listen and run away. Morning, early morning 4 you are getting up every day. By 6, 2 hours of jogging only. And एक sharp मैंने सुना है 6:15 या 6:30 को एक कप चाय और 2 बिस्किट्स देते हैं बस। फिर से परेड। बच्चा 2 दिन में ऐसा भाग गया। So that is what they are making you, the future, force of our India. I don't know how many have been having patriotic feeling. I've seen this army and majors, commanders, they have this good habit of speaking. अच्छा आपके पापा है? हाँ। मेरे चाहते हैं। तो देखो उनमें जो एक डिसिप्लिन या जो जज्बा ना आप में और मेरे में कभी नहीं आता। ये आर्मी के लोग ही बोलते हैं कि हम लोग दिन में मिनिमम 1500 बार मिनिमम जय हिंद बोलते हैं। तो मैं वो आता है ना, हाँ पहला जय हिंद, that also हम और आप जय हिंद ठीक है करते हैं अभी भी कॉल करते हैं। हाँ मतलब वो सेंटिमेंट्स वो रहता है उनमें, और अब मैं वो बोलेंगे ना ठीक है ना बाबा। देखो Israel is a country where all the children after the 10th standard 2 years of compulsory military training. Girls and boys are given that stain gun, sharp shooter gun रहता है उनके बेल्ट में डाल के घूमते हैं, and they are mentally taught that never use the gun for any wrong purpose. मार्केट एरिया से लेके सब्जी मंडी से लेके जिसने भी एनएस ट्रेनिंग लिया नेशनल सर्विस, सब लोग के पास वो गन रहता है, सब लोगों के पास। अभी आपसे जो आप अपना नेहरू सब्जी मंडी में सब लोग गन लेके इधर तो घूम रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। So look at that tiny country giving such an importance to military. So इंडिया में भी होने वाला है। That is why the girls and boys of Israel know what is their army doing. देखो वरना इजराइल ऐसा जगह पर बैठा है ना ज्योग्राफिकली, सब पे at a time it is fighting war with 3 countries, 3 different countries. And वो अभी भी अपने आप को चुपने बैठा है, बोलता है कि और 15 दिन में दोबारा ईरान पर अटैक करेगा। यार ये कब से लड़ाई कर रहा है? लड़ाई चल रही है। इंडिया इतना बड़ा है इजराइल से, जीडीपी हमारा उससे 10 गुना बड़ा है। इंडिया ने 2 या 2.5 दिन किया, बोला बस बस अभी हमारे पास पैसे नहीं बंद करो, बिकॉज वो उनका वो जो बोलते हैं ना मेंटालिटी इज डिफरेंट। तो हियर व्हेन यू स्पीक अबाउट दिस मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना,
I feel these are rocks which are very rich. अब ऐसे one foot square of a granite might cost you 300 rupees. तो सोचो अगर मैं पूरा प्लेटफॉर्म का अगर मैं खरीदा कम से कम मुझे 1.5 लाख का तो सिर्फ वो पत्थर ही आता है। और जो आपके घर में जो आएगा बेचाने के लिए बोलेगा कितने का महंगा माल बोलेगा तो इसका डबल प्राइस लगेगा। तुझे कौन खरीदता है? नहीं साहब, थोड़ा भी क्रैक लगा ना पूरा टूट जाएगा। एंड ही टेक्स एक्स्ट्रा मनी एंड इज वेरी केयरफुली प्लेसिंग दैट ग्रेनाइट और मार्बल। तो मार्बल महंगा है और ऊपर से उसको फिटिंग करने का भी महंगा है। अंडरस्टूड? So these does not have any characteristics what the original rocks had. देखो, whatever glitters is not gold, everyone knows. But whatever glitters in rocks is a metamorphic rock. Shiny है, luster है। फिर आप बोलेगा और क्या सर, strength भी है। वो मेजर के टाइप से किस तो हमारे साउथ में कहावत है कि कितना भी मार लो पत्थर की तरह बैठा है, पर पत्थर को जितना मार खाता है वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू बन के बाहर आता है। देखा है? How does that chisel and that hammer he does it? हाँ, अगर उसके पास उतना दम नहीं कि वो चिजल का ले, फिर वो ब्यूटीफुल स्टैचू कभी नहीं बनेगा। So you guys are like that, raw stones. Maybe in future become a beautiful student or a very dedicated student. देखते हैं, और टाइम बताएगा। मैं तो सिर्फ भाषण देता रहता हूँ। चलो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। We are closing to the chapter, फिर एक ही है रॉक साइकिल और नेक्स्ट वीक हम खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सर मैं इसमें चैप्टर खत्म कर दिया। अच्छा है क्या ये चैप्टर हमारे बुक में है ये चैप्टर नहीं है। Hey, wait. One he says there are two reactions. चुपचाप लिखो। अरे स्टॉप वॉच में Right now, thermal. अच्छा वो ऐसे बोलना आप ऐसे ये टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक बोलना First you write thermal metamorphism. 1 say and 10 will react. हमारा वो एक ही चैप्टर है। तो तू अभी रहने दे। तो उसमें बहुत से लगा टॉपिक। Thermal metamorphism लिखो। Mainly occurs when the transformation of original rock takes place due to the influence of transformation of original rocks takes place due to high temperature ओरिजिनल वॉच it's due to, underline that word, high temperature. Example, slate formed from clay, clay tables for writing SLATE. यार बच्चा जो लिखता है उसका भी स्पेलिंग नहीं आता। अच्छा या डू मत। and graphite from coal Now write dynamic. Mainly because of pressure at a greater depth. Mainly because of pressure at a greater depth. Within the Earth's crust, formed because of great pressure at a greater depth within the Earth's crust. Full stop. तो मेनली क्या? Chemically active hot gases. तो मेनली Full stop. Oh. मेनली Chemically active hot gases
helps in changing the chemical composition of a given rock. Helps in changing. The chemical composition of a given rock. Example, use of white marble in Taj Mahal is metamorphized or metamorphosed. What do you spell? PHISED. Morphized from dolomite. वो भी एक type का igneous rock है, dolomite. So artificial metamorphism है नहीं, these are original. Artificial कर सकते हैं, but उतना heat तो generate कैसे करें? कर सकता है, but फिर कितना रॉक को तो बनाएगा? एक एग्जांपल बना के घर में पॉकेट में रखेगा। ताज बनाने के लिए भाई आर्टिफिशियल मेटामॉर्फिज्म वो भी शाहजहां ने बनाया। शाहजहां बोलेगा मैं इससे अच्छा मैं जेल पे ही बैठा रहता हूँ। So meta क्या? Metamorphized. Morphized. हाँ, PHISED. PHISED. Metamorphized. Last one लिख दो, regional metamorphism. दो हुआ. The third one is regional. Shall I allow you to write this one on your own? No sir. क्यों? तो नहीं पता ना सर। वो तो टेक्स्ट में है, but I'm shortening it and giving it only one line. और ये notes काफी helpful रहेगा when you are writing in your school. Right up. It is during the mountain building process. It is during the mountain building process. Building. हाँ, the mountain बनता है. Both I and S rocks. What is I and S rocks? Sir, igneous and sedimentary rocks. I and S rocks. आपके लिए short form. Mountain building. I and S rocks are buried deep inside the crust. Are buried deep inside the crust. Full stop. This pressure of overlying rocks. This pressure of overlying rocks and heat caused and the heat मतलब नीचे समझ में आ रहा what I'm saying? Change these rocks and this process is RM. What is RM? Regional metamorphism. Regional. And this process is regional metamorphism. RM डाल दो. RM जैसे इधर डालेंगे ना उधर ऊपर जाओ. Cause changes. And this process is RM. ऊपर जाके RM डाल दो उसके बाजू में. हाँ अभी क्या करेंगे बेचारे आप लोग लिख के थक रहे हैं. हाँ last heading. एक दिन ऐसा भी होना चाहिए. Economic importance. तू दो वर्ड लिखता है 4 वर्ड खा जाता है. मैं इधर से सब देखता हूँ. इतना सब नहीं लिखा है इतना बड़ा है. Write down. Economic importance of examples rocks. regional Which is metamorphism. Limestone to marble, sandstone to quartzite. हाँ यार ये तो बहुत महंगा है. Refer page 64. कुछ नहीं है. Stone to Marble, sandstone to quartzite. Quartzite ये watches में सब use होता है. quartz watch. हाँ पता है सर. हमारे पास इसके लिए. Point number 1 for economic importance of rocks. अब ये rocks क्यों पढ़ रहे हैं? Point number 1. अभी short देता हूँ. We will wind up. Exact time. Rocks high value. Short में लिखो. बस second point. Used as building materials. Third. Used as building materials. Third.
source of gold, silver, platinum. etc. Gold, silver, हाँ वो भी, but example पूछेंगे example. तो सर जैसे ही लिख दो ना. पहला पॉइंट क्या था सर? Useless building में Rocks तो है. Full stop. Next, rocks are mainly mainly wasted in several manufacturing industries. एक काम करो, mainly wasted मत लिखो. Rock waste are used in manufacturing industries for various articles. गलती. So, rock waste are used in manufacturing industries. Waste जो कटा हुआ वो ऐसा वाला ना. In various manufacturing industries, new articles. Thank you. 1 minute पहले छोड़ रहा हूँ पंजाब. Manufacturing. New articles, new commodities. Happy and going. You behave like this. I'll try to, है ना? NRL26. जो रहेगा तो उसका तो बहुत ही बन से